Hello students, how are you? Very precious good morning to all of you. Today, now we are going to discuss the new cell organelles, and the name of the cell organelles is known as mitochondria. Mitochondria is a very important cell organelles of the cell. First of all, what is the meaning of mitochondria? Mitochondria is made up of two words. Mitos means thread and chondrius means granule, means thread like granules present in the cytoplasmic area, that is known as mitochondria. The term mitochondria, first of all proposed one scientist C. Benda, this is the name of the scientist, proposed the term mitochondria. Actually the number of mitochondria varies from cell to cell. अगर हम नंबर की बात करते हैं तो सेल टू सेल वेरी करता है. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies from say 50 to 5,000 per cell. अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वह सेल टू सेल वेरी कर रहा है. वाई? व्हाट इज द रीजन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल? in our body, for example, agar le lo, in our body having a various type of cell and their function are differ with each other. If you take two example, one is the liver cell, another the heart cell. Heart cells are more active or functionally more active in comparison to the liver cell, because every time heart pumps and flow the blood throughout the body. So therefore needed more energy of heart cell in comparison to the liver cell. तो heart cell में क्या होगा? Number of mitochondria is more in comparison to the liver cell. तो number of mitochondria is totally dependent on the function of the cell. अगर किसी भी सेल का फंक्शन वो ज़्यादा करता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ the mitochondria? Here is the diagrams of the mitochondria. The mitochondria is the double membranous structure. Here is the outer membrane and here is the inner membrane. The outer and inner membrane. So this type of structure is known as double membranous structure. Outer membranes are thick, smooth and freely permeable. जो बाहर की membranes होती है ये thick, स्मूथ, आपको कहीं पर भी रफनेस जैसा नहीं दिख रहा होगा, एंड फ्रीली परमेबल मीन्स ट्रांसफर्ड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. बट द इनर मेम्ब्रेन्स आर थिन, रफ एंड सेलेक्टिवली परमेबल. थिन भी होती है और रफ क्यों हुई? बिकॉज इन द सम रीजन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेटेड inside to form a finger-like projection, and this finger-like projection is known as cristae. The cristae is what? Cristae is the inner membrane modification. This is the modification of the inner membrane. इस कारण से इनकी जो wall होती है वो roughness in nature as well as they are selectively permeable in nature. Selective permeable means selected molecules passes from here to there. यहाँ से यहाँ पर in between them a space are present and this space is known as perimitochondrial space. Perimitochondrial space present between the outer and inner membrane, and this space is known as perimitochondrial space. Inside them आप देख सकते हो on the surface of the inner membranes various very large number of F1 particles or oxysomes are present. यहाँ पर F1 particles or oxysomes they are attached on the inner membrane of the mitochondria. The F1 particle is also vary from cell to cell, depends upon the function of the cell. If any cell having more functionally active, the number of F1 particles are more in number, because the F1 particles play a very important role for the synthesis of ATP inside the mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है F1 पार्टिकल्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है जो ATP की सिंथेसिस करता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है. अभी हम लेटर ऑन डिस्कस उस पर हम करेंगे. तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स को हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हियर द
fluid like structure they are present in here, that is known as mitochondrial matrix. The mitochondrial matrix contains various things, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. Various type of enzyme present in the matrix area, they important role for Krebs cycle. At the time of cellular respiration की जब हम बात करेंगे तो various type of metabolic cycle takes place inside the मैट्रिक्स एरिया और वहाँ पर पाई जाती है. और द मैट्रिक्स कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रेब्स साइकिल. तो मैट्रिक्स कंटेन्स 70S राइबोसोम्स. एक्चुअली द अगर इसकी हम बात करें दे कि ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, बट उसकी अगर इंटरनल अगर उसका हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो 70S राइबोसोम्स वनली फाउंड इन प्रोकैरियोट, एब्सेंट इन यूकैरियोट. बट इन हियर 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट हियर एंड देयर एक्चुअली इससे क्या होता है, प्रूफ होता है एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम प्रोकैरियोट. एज वेल एज सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए आर फाउंड. ड्यू टू सर्कुलर डीएनए this cell organelles is known as semi-autonomous cell organelles. Why it is called an semi-autonomous cell organelles? Because near about 50% of the function governed with the help of own DNA and rest 50% of the function of the mitochondria governed with the help of cellular DNA. So this type of property, this type of organelles is known as semi-autonomous cell organelles. The matrix already discussed here. On the inner membranes as well as matrix, हमने बात पहले भी बोला कि in the matrix area one cycles are present and this cycle is known as Krebs cycle at the time of cellular respiration, जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. On the inner mitochondrial membranes there are two different type of cycle metabolic pathway takes place. First is the electron transport system, another is the oxidative phosphorylation. What is the electron transport system? At the time of cellular oxidation, electrons are passed from one electron to another electron carrier. At this reaction is reaction synthesis of ATP or ATP are generated. तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन को पिकअप करते हैं एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल for the production of energy in the form of ATP as well as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation means क्या होता है, synthesis of ADP. Oxidative ADP plus PI then converted into ATP, and this process is known as oxidative phosphorylation. तो आप देखोगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोथ आर लिंक्ड एट 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर लिंक होते हैं, जिसके कारण से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसी समय एटीपी जनरेट होती है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा एक नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों इसको पावर हाउस बोल रहे हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करता. अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ से हो रहा है. तो हमने पहले भी डिस्कस अभी कुछ देर पहले हमने किया था कि ऑन द इनर मेम्ब्रेन्स very large number of F1 particles are attached. Here is a large crystal का एक diagrams है. Here is the F1 particles are oxysomes. F1 particles play a very important role for the production of ATP. If you see the structure of F1 particle, here is the clear cut diagrams of F1 particles. F1 particle is also known as oxysome. The F1 particles contains 3 parts: base, stalk as well as head. In the head region of the F1 particle, a special type of enzyme present in the head region of F1 particles and play a very important role for the production of ATP. तो अगर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऐसा इंपॉर्टेंट साइट है, वह कौन सा साइट हुआ? हेड रीजन ऑफ F1 पार्टिकल play a very important role for the production of ATP. Therefore, this cell organelle is also known as power house of the cell. तो इसलिए हमने पहले भी बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया play a very important role for
production of energy in the form of ATP. So here mitochondria are totally finished. Thank you. Have a nice day, all of you.